देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ब्रिटिश कोलंबिया च स्टेट ऑफ एमरजेंसी नूं 14 दसंबर तक वधाया गया है। सूबे च हड़ कारण स्थिति बेकाबू होने कारण सरकार ने फैसला लिया है। मीह कारण नदियां उफान ते ने, कई इलाकों च बंन टुटण दे कारण पानी रिहायशी इलाकों च दाखिल होया है। हड़ पीड़तां नूं सुरक्षित स्थानां तक पहुंचाया जा रहा है। The Lower Mainland to Hope region, Sea to Sky region, the Sunshine Coast, Gulf Islands and Vancouver Island. The fuel conservation measures are working, and I want to thank British Columbians for their patience, but we need to stay the course for another 2 weeks until we have the Trans Mountain Pipeline back online. We need to ensure our supply chains and emergency services have the fuel that they need to function. Minister Ralston is with us today and will provide more details shortly. Given the extension of the fuel order and the continued threats of storms and flooding, we are also extending the provincial state of emergency through to the end of day on December 14th. Extending the state of emergency will support the ongoing response and recovery from the widespread damage already caused by flooding, while positioning us to take all necessary steps. हड़ की स्थिति के नाल निपटण दे लई गैस रशनिंग नूं 14 दसंबर तक वधा दिता गया है, जिस तहत गैस स्टेशन ते ईंधन की सीमा 30 लीटर तक रखी गई है। People have seen the images today of military, police, firefighters and volunteers. I would like to give a shout out to the Shaw Hommel First Nation, who also brought people and equipment to throw into the effort, and all of these individuals and organizations spent hours assembling tiger dams, and it was nothing short of astounding to see that, and it was a real race against time, and we thank them for their efforts. Our highway network continues to be challenged by the extreme weather we're experiencing, but we are meeting that challenge, and it's because of the incredible efforts of first responders, maintenance contractors, and many, many people in the Ministry of Transportation and Infrastructure and Emergency Management BC. ब्रिटिश कोलंबिया च आए हड़ दौरान सिखां दे वल्लों लोक सेवा च कीते कम्मां नूं कैनेडा समेत दुनिया भर च सराया गया। लंगर तो लैके होर राहत समग्री हड़ पीड़तां तक सिख भाईचारे दे वल्लों पहुंचाई गई। हड़ मारे लोकां दी ब्रिटिश कोलंबिया च वसदे सिख भाईचारे ने सार लई है। इसे कारण प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सिख भाईचारे दी शलाघा कीती है। For the volunteers at Surrey Gurdwaras who've sent meals to those who lost their homes. For the women and men in Abbotsford who last week passed sandbags hand to hand. हड़ां बाद सूबे च खाण दी समस्या खड़ी होई। कई शहरां च ग्रोसरी स्टोर खत्म होए। लोकां दे वल्लों धड़ाधड़ खरीदारी कीती गई। सूबाई सरकार दे वल्लों संयम रखण दी अपील कीती गई। BC दे विच वख-वख शहरां च स्टोरां च ग्राहकां दीयां लंबीआं लाइनां देखण नूं मिलीआं। अजिही स्थिति च ब्रिटिश कोलंबिया च मौजूद पंजाबी भाईचारे दे वल्लों मुश्किल च फसे लोकां दे लई लंगर ते होर राहत समग्री दा प्रबंध कीता गया, जो हाले भी जारी है। पानी च फसे लोकां तक लंगर ते राहत समग्री पहुंचाई गई। सड़कां दे संपर्क टुटण कारण कैमलूप्स च ट्रकां दी वड्डी कतार लगी। इन्हां दे लई भी लंगर सेवा पहुंचाई जा रही है। सरी दे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। This is a very important part of our faith, the Sikh faith, that we feed others, especially those in need, and also before we feed ourselves, we share with others. Been really appreciative, and a lot of these truckers are from Abbotsford, Vancouver, Surrey, and away from their homes, away from their families. I know we spend most of our time on roads, away from the families, but in this kind of situation, it's hard when we are not even rolling, and we are just sitting over here. The people of the town, they have been really helpful for us. We've been getting food from them since the day one we are stuck here. ब्रिटिश कोलंबिया च हड़ बाद हालात नाजुक ने। लोकां नूं सुरक्षित स्थानां तक पहुंचाया जा रहा है। कई थावां ते रिहायशी इलाकिਆਂ 'ਚ पानी अजे भी ज्यों दी त्यों वाली स्थिति 'ਚ है। घर पानी 'ਚ डुबे हुए ने, सड़कां टुट चुकीਆਂ ने। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हड़ प्रभावित इलाकिਆਂ ਦਾ दौरा किया, क्योंकि सूबे 'ਚ नਵੇਂ तूफान की चेतावनी जारी की गई है।
one of the things that John and I agreed on and have always agreed on is the need to have people's backs during tough times. And that's exactly what we've been focused on and exactly the work that we are doing. This afternoon, when I got to visit Abbotsford and see so many of the extraordinary community volunteers, members of the Canadian Armed Forces, emergency responders, and just leaders on the ground who are devastated and heartbroken, but also stepping up to be there, not just for themselves, but for their community, for their neighbours. It really does show the strength of British Columbians, the strength of Canadians, in that we're there for each other. We have each other's backs, and that's what allows and enables your governments to do that as well. Once again hitting our province with more on the way. This will impact already soaked lands and waterways. The next 9 or 10 days could be quite challenging. Environment and Climate Change Canada has warned about a series of storms. We all need to pay close attention to the experts, as the forecasts for these will get more accurate the closer we get to these events. We're a resilient province, that is clear. We're strong, compassionate, and resolute. And above all, we help each other in good times and in bad times. Of course, the size of the current fight we're in together is significant. It's enormous. It involving first responders, volunteers, emergency workers, heavy equipment operators, farmers, work crews, transport drivers, just about everybody, and many more hardworking people going around the clock in all areas of the province. We're not out of the woods yet, but good work is being done on the ground to keep people safe and get communities the supports that they need. ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਠੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। BC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ 'ਚ 10% ਘਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Based on evacuation order due to flooding, eligible households will receive $2,000. To access these funds, evacuated British Columbians need to register with the Red Cross by calling 1-800-863-6582. We will be issuing a release with these details, and details are also available on the Canadian Red Cross website. There are other ways you can help as well. You can help by keeping the roads clear and avoiding unnecessary travel through hard-hit areas, by conserving fuel, carpooling, and taking public transit whenever possible, by checking on a neighbor to see if you can save them a trip to the grocery store. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। ABP सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।